மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் வழங்கும் அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கும் புஷ்பா 2 டிசம்பர் 5 முதல் திரையரங்குகளில். BSS மற்றும் வேர்ல்ட் ஸ்கில் கவுன்சில் அங்கீகாரம் பெற்ற நிராஸ்பாத அழுத்த சிகிச்சையை கற்று நீங்களும் தெரபிஸ்ட் ஆகலாம். Michigan, Sam 94. What? Minister? Why you are laughing? Minister? Don't be a laughing stock. Don't be a laughing stock. Mr. Raja, kindly Why you address are the chair. laughing? Are you having any substantial evidence? Where is the evidence? Thank you for giving me this opportunity to speak, sir, in between. I will say all this and more during my reply. But you may thank me afterwards. I have not finished yet, please. I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection on that? What is this, sir? What is this? Sir, Mr. Raja, would you like to speak? Mention the rule. Sir. You mentioned the rule, okay, rule number. Sam 94. Sam 94, read. 90 or 94? 94. 94, okay. Nishikant referred. Sam 94. What? Minister? Why you are laughing? Minister? Don't be a laughing stock. Don't be a laughing stock. Why you are laughing? Mr. Raja, kindly Why you address are the chair. laughing? Sir, 1 second, Sir, please. Justice Please, must 1 say. second, please. Please address the chair. Honorable member Nishikant submitted before this house 94. Goga is exceeding the limit beyond the 94. Now the honorable member is saying in 1971 and the loan was granted by State Bank. Is it within the bill? Are you having any substantial evidence? Where is the evidence? It's not in the house. Beyond the meets and bounds of the bill, you are referring without any reason and baseless allegations. What does it mean? Give me the ruling. I heard you. Mr. Sambit Patra, I heard you. 1 second, please. You have anything to say in defense, I will listen, otherwise then I'll take a decision. Please. Yeah. 1 second, please. Sir, I quote from, please the honorable members, sir, to you, sir, I draw my powers from what you laid in the rule number 94. We have to be within the ambits of the bill that is being discussed, the amendment that is being discussed. Here we are discussing the Indian banking sector and the amendment therein. So of course, the Nagarwala case is one of the foundations on which reforms of the banking sector are based. It is recorded, it is noted. It is a foundation on which the reforms of banking sector are based. And by the way, I would like to remind sir, honorable member, did not pick up the phone. Mr. Malhotra picked up the phone. He was the manager caller. One So second, you have sir. got the whole thing wrong. माननीय मंत्री जी, किरण रिजिजू जी. Raja ji, 1 second, please be seated. Please First be of seated. all- I'll give you a chance. first of all, Please be seated. sir, while sitting here, Please, I please. heard some of the members from opposition bench said, Chairman, hi. You raise slogans against the chair. I take serious objection to that. चेयर के खिलाफ आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं. You can raise rules. अरे एक मिनट सुन लीजिए. आप रूल के तहत बात रख सकते हैं, लेकिन चेयर के खिलाफ हाय नाराज आपने जो नारा लगाया, नाराज हो सकते हैं, आप नारा नहीं लगा सकते चेयर के खिलाफ. नंबर 1. नंबर 2, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये बात करने का तरीका है? ये कोई बात करने का तरीका है? आपका नेता, आपका ये यहाँ कांग्रेस पार्टी का लीडर भी है, डिप्टी लीडर भी है. अगर ऐसा ही कोई भी उठ करके खड़ा करेगा, ऐसे मर्जी से बोलेगा, सदन ऐसे नहीं चलता है. आपको ऑथराइज किया है तो आप उठिए, मगर यह व्यवस्था का बात उठाया. राजा ने रूल को कोट करते हुए कहा, मैं इसीलिए बता रहा हूं, सबसे पहले चेयर के खिलाफ जो नारा लगाया, चेयरमैन हाय, ये बहुत गलत है और इसको जरूरत पड़े तो माफी मांगना चाहिए. दूसरा, निशिकांत दुबे ने जो हमारे संबित पात्रा ने जो बात रखा है, उन्होंने एक एग्जिस्टिंग केस को बताया है. कहानी उन्होंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाया, एक एग्जिस्टिंग केस को उसने रेफर किया है. वो केस उन्होंने कोई यहाँ डिस्कवरी नहीं किया है, इसलिए वो केस रिकॉर्ड में है. वो हम डिस्कवरी करके नया केस तो निकला नहीं है. इसलिए मैं चाहता हूं कि
इसके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही है। आप बिल पे ही केंद्रित रहे, हमारे मेंबर भी बिल पे ही केंद्रित रख करके बात रखेंगे, आपके लोग भी बिल पे ही बोले, ये मेरा आग्रह है। एक I think while Sambit Patra is speaking on the banking legislation, he actually crossed all the limits, was assassinated. She is a martyr of this country. She fought against Pakistan and won the war. Entire Indian are treating some other. I think I am reminding the members when Pakistan war was won. What word he used? What word he used, sir? Sir, he used the word in telephone and called the bank manager and asked the bank manager to be. Where he got there? Sir, he was witness there. Whether he was present there. Okay. Whether he was present there. एक सेकंड प्लीज एक मिनट प्लीज वेणुगोपाल जी, अब प्लीज आपको अरे सुनिए एक मिनट प्लीज। हाँ, मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं, एक मिनट प्लीज। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम उसमें से एक्सचेंज कर देंगे, लेकिन मेरी ये अपेक्षा है जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि चेयर पर कभी भी टिप्पणी नहीं करें। चेयर पे जो बैठा है वो हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हम अगर सदन की मर्यादा रखेंगे तो उचित रहेगा। आप बोलना चाहते हैं? Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak, sir, in between. एक विषय बोल रही है भाई, बिल के एक कमेंट्स आपने किया, उस पर टिप्पणी करना चाहती हैं आप? Sir, I will definitely say all this and more during my reply. I will say all this and more during my reply. But no, I have not finished yet. You may thank me afterwards. I have not finished yet, please. Sir. बुला लो उनको, बैठे हैं चेयर में, बुला लो। हाँ ये सर, आप तो बोलिए। Sir, I'd like to appeal to you, sir. Since the point derived from, 94 and then said confine yourselves to the bill, I'm here wanting to hear and then wanting to reply. And you've taken a very considered call, sir. I respect your view that you would remove the name of former Chief Prime Minister. Respect Mrs. Indira Gandhi for her achievements. Of course, we equally remember her for emergency. But I think it is important. But as contentious, there's no proof. There are enough people who said he has not said that. Therefore, even that statement that Vajpayee ji said this should be equally removed. And you've taken a considered call, sir. Why? Mrs. Indira Gandhi is not respected? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection on that? What is this, sir? What is this? Sir, equally. Therefore, I appeal to you, sir. You said that will be removed from Sambit Patra's statement. I appeal to you that under 94, if people have spoken beyond 94, and I take the Honorable Member Gogoi's name here, most of his speech was beyond 94. Would you consider please removing that also from the record? Member K.C. Venugopal is very, very clued into what I'm saying. And therefore he is saying, I'm challenging you. No, I'm appealing to you to remove Gogoi's complete statement, which was beyond this bill. And equally, the member who said, Chairman, hi, remove that as well, sir. That's my request to you. प्लीज वित्त मंत्री जी ने एक मिनट
प्लीज वित्त मंत्री जी ने जो सवाल उठाए हैं, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट प्लीज बैठिए, दादा प्लीज प्लीज. நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம். ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி. ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள். CNC இருக்கு, தேர்வு பயம் எதற்கு? இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு.